The topic of this module is fixed and variable costs. These are two costs which are almost always there in every business organization. This is module number 218 of the course of Financial Management. In this module, we will discuss what fixed cost is and what is the impact of fixed cost. And similarly, we'll also talk about what is variable cost and what is the impact of variable cost. So the first thing that comes to our mind whenever we use the term fixed cost, that the cost which is fixed, यानी वो cost जो कभी तब्दील नहीं होगी. This is not the right concept about the fixed cost. दुनिया में कोई भी cost हमेशा के लिए fixed नहीं होती, ना हो सकती है. लेकिन जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की टर्म बोलते हैं तो इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक स्पेसिफिक मीनिंग है. लेट्स सी व्हाट इट इज. द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से, सेल्स के कम होने या बढ़ने से जो कॉस्ट तब्दील नहीं होती उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं. यानी ये कॉस्ट किसी और वजह से, किसी और फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में तो ज़रूर तब्दील हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो मैं कह सकता हूं कि रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट. अगर एक फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन की जा रही है तो उसका रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि उस फैक्ट्री बिल्डिंग में कितनी प्रोडक्शन की गई इसका ताल्लुक उसके रेंट के साथ नहीं होता. उस बिल्डिंग का रेंट सेम रहेगा चाहे हम उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करें या उस फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन करें. तो प्रोडक्शन के फ्लक्चुएट होने से, क्योंकि रेंट फ्लक्चुएट नहीं होता, इसलिए रेंट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है. लेकिन क्या रेंट हर साल हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं. वी हैव एन इंक्रीज इन द रेंट ग्रेजुअली. जनरली द कॉन्ट्रैक्ट्स आर कि हर साल रेंट की अमाउंट में एक इजाफा होता है. बट दैट इंक्रीज इज नॉट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. सो द फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट which does not change with the change in the level of operations. So we can say that fixed cost is the period cost. यानी एक महीने की ये कॉस्ट है, एक साल की ये कॉस्ट है. इस कॉस्ट को टाइम के साथ वेरी होना है, इसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होना. अगर कोई कॉस्ट का एलिमेंट टाइम के साथ फिक्स हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा. अगर हम 100 रुपीज़ रेंट पे करते हैं और उसमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपी पर यूनिट आएगी. लेकिन अगर हम इस 100 रुपी रेंट के साथ 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1 रुपी से कम होके 0.50 पैसाज हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी. तो हम ये इस बात से नतीजा निकाल सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो कंपोनेंट है, जब भी ऑपरेशंस बढ़ेंगे, जब भी सेल्स या प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसका कंपोनेंट पर यूनिट कॉस्ट के अंदर कम से कम होता चला जाता है. एंड दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स द ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वेरिएबल कॉस्ट. जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, वो कॉस्ट जो वेरी होती है, वो कॉस्ट जो चेंज होती रहती है. हमने अभी ये बात की कि फिक्स्ड कॉस्ट भी तब्दील होती रहती है, लेकिन उसको हम फिक्स्ड इसलिए कहते हैं कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ ऑपरेशन के साथ तब्दील नहीं होती, उसके प्रोपोर्शन से तब्दील नहीं होती. तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को वेरिएबल कॉस्ट पे अप्लाई किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट करती है, प्रोडक्शन के चेंज होने से, ऑपरेशंस के चेंज होने से घटती और बढ़ती रहती है, प्रोपोर्शनली उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है. सो द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल,
if the cost to produce 1 unit is 10 rupees, then the cost of producing 2 units will be 20 rupees. And likewise, if we keep on increasing the number of units, the variable cost will keep on increasing. Variable cost is also termed as the marginal cost. Marginal cost का मतलब है कि एक मजीद यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट हमें इनकर करनी है वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती. And the last and another very important point is that unlike the fixed cost, the variable cost in terms of per unit cost does not change. यानी जब मैं ये कहता हूँ कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपीज़ कॉस्ट आती है, तो 2 यूनिट्स को बनाने के लिए 4 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, यानी पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज़ ही रहेगी. अनलाइक द फिक्स कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट कम से कम होती चली जाती है. So we can conclude our discussion on fixed and variable cost on the note that fixed cost is a period cost that does not change with the level of production, and per unit fixed cost keeps on reducing with the increase in production that creates the operating leverage. Variable cost, on the other hand, is the cost that proportionally changes with the level of production. It's also called the marginal cost, but the per unit variable cost remains the same. In the next module, we'll see the impact of fixed cost on the leverage, and we'll understand that how this applies to this concept.